Welcome to the second Sunday of the Easter as we worship the Lord. हम दूसरे पुनरुत्थान पर्व के पश्चात इतवार में आराधना में शरीक होते हैं. And may God bless us. As the theme for today, our worship is Witnesses for Christ. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह. And the Bible said, Christ died and behold, He is alive forevermore. Hallelujah. मसीह मर गया था और देखो वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है. Hallelujah. We are called to worship with the living Lord today. जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं. प्रभु आप सबको आशीष देवे. प्रभु यीशु मसीह के 40 दिन जो पृथ्वी पे जीवित रहे, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि सचमुच खुदावंद यीशु मसीह मर गया अब जीवित है. Let us all pray. Almighty Father, grant that as the disciples found again their risen Savior in the breaking of the bread, so we also may ever know His presence in our midst and bear joyful witness to His saving power, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. हे सर्वशक्तिमान पिता, वर दीजिए कि जैसे शिष्यों ने अपने मृत्युजय मुक्तिदाता को रोटी तोड़ते समय पूर्ण पाया, वैसे ही हम उसकी उपस्थिति में अपने मध्यम अनुभव करें और आनंद से उसकी मुक्ति देने वाली सामर्थ्य की साक्षी दें. उसी के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं. आमीन. Jesus said, "You shall be my witnesses in Jerusalem, in all the Judea and Samaria, and to the ends of the earth." As we worship the Lord, may God bless us to witness His name today till He comes back in glory. Amen. The responsive reading has been taken from Psalm chapter 30, verses 1 to 4 and 11 to 12. भजन संहिता 3 अध्याय 1 से 4 और 11 से 12 आयत. प्रभु, मैं तेरा गुणगान करूंगा
क्योंकि तूने मुझे ऊपर खींचा और मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे स्वस्थ कर दिया। प्रभु, तूने मेरे प्राण को मृतक लोक से बाहर निकाला। तूने मुझे जीवित रखा कि मैं फिर अधोलोक में ना जाऊं। Sing the praises of the Lord, you his faithful people. Praise his holy name. You turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Today's Bible reading has been taken from the Acts of the Apostle, chapter 2, verses 22 to 32. I repeat, verses 22 to 32 from the New International Version. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracle, wonders, and sign, which God did among you through him, as you yourself know. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. David said about him, I saw the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest in hope, because you will not abandon me to the realm of the dead. You will not let your Holy One see decay. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was a prophet and knew that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on his throne. Seeing what was to come, he spoke of resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of the dead, nor did his body see decay. God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of it. This is the word of God. Please respond by saying, Thanks be to God. अब मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र के नए नियम से पढ़ूंगी। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक अध्याय 2 पद 22 से 32 तक। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक अध्याय 2 पद 22 से 32 तक। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई।
वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपनी पवित्र जन को सड़ने ही दे। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। The scripture reading of the day is taken from the first letter of Peter, chapter 3, starting at verse 13 to 18. From Good News Bible, today's English version. 1 Peter, chapter 3, starting at verse 13 to verse 18. Who will harm you if you are eager to do what is good? But even if you should suffer for doing what is right, how happy you are. Do not be afraid of anyone and do not worry, but have reverence for Christ in your hearts and honor him as Lord. Be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you, but do it with gentleness and respect. Keep your conscience clear, so that when you are insulted, those who speak evil of your good conduct as followers of Christ will be ashamed of what they say. For it is better to suffer for doing good, if this should be God's will, than for doing evil. For Christ died for sins once and for all, a good man on behalf of sinners, in order to lead you to God. He was put to death physically, but made alive spiritually. This is the word of the Lord. आप सभी को जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है पतरस की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय 13 से 18 आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर,
जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तेरी
gospel reading has been taken from the Gospel according to Luke, chapter 24, verse 13 to 35. Luke chapter 24, verses 13 to 35. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, called Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened here in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the 3rd day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but they did not see Jesus." He said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going further, but they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening, the day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Let us intercede to God, and please respond by saying, "Hear our prayer," when I say, "Lord, in your mercy." In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayers. For all who live in this place or city, town, village, for the removal of all that divides us from each other and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry, and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country, Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others, Lord, in your mercy, hear our prayers. For those who are suffering, the poor and hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, and for all who help them, Lord, in your mercy, hear our prayer. हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी
जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, आप सब बोले, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, आप सब बोले, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेष करके हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप वारिस मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड टिमोथी शॉ, रेवरेंड अरविंद पीटर, हमारे ले रीडर आशीष और अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, आप सब बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, आप सब बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। Let us say all together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us say, Amen. The Lord Jesus said, "The Lord our God is the only Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. And the second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault.
We are truly sorry and repent of all our sins for the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us. Forgive us all that is past and grant that we may serve you in newness of life to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship Him. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. Breathe on me, breath of God, fill me with life anew, that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure, until with thee I will one will to do and to endure. Breathe on me, breath of God, till I am wholly thine, till all is lovely part of me flows with thy fire divine. Breathe on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Let's pray. Lord, as we look upon to the word that we look to ourselves, जिस तरह परमेश्वर वचन की ओर देखते हैं अपने जीवन को, हम अपने आप को देख सकें. Not our will, Lord, that your will take place. प्रभु हमारी इच्छा नहीं, आपकी पवित्र इच्छा प्रभु जी वचन की ओर पढ़ने और सुनने से हो. We ask this in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Amen. Today being the second Sunday after Easter, today our theme is witnesses, or witness to Christ's resurrection. खुदावन यीशु मसीह के पुनरुत्थान जीवन की गवाही हमको देनी चाहिए. पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, there are a lot of things that are there I'd like to say about witnessing. There are a lot of theories, a lot of assumptions, and a lot of controversies were there at the time of Jesus when he was resurrected. बहुत सी ऐसी बातें थी जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विरुद्ध बातें की जाती थी. lot of things. जैसे कहा जाता था कि शिष्यों को जो सपना आया कि यीशु मसीह जी उठा, कहा जाता था कि यीशु मसीह की बॉडी चोरी कर दी थी, शिष्यों ने मरा नहीं था. He never died, he was just sleeping.
People believe that in those days the disciples were hallucinating. A lot of theory. They went in a wrong grave. वो एक गलत कब्र में चले गए थे जहाँ पर यीशु मसीह कब्र नहीं थी. There was a theory they were saying that his body was stolen by the disciples, and some of the body was put over there. So these are the things which are there, which wanted to prove that Jesus has not been resurrected. प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ है, ऐसा दिखाना मांगते थे. It is not a visionary experience of the disciples and the people that is presented in the Bible. कोई सपने की कहानियां नहीं है जो कि बाइबल में बताई गई है. These are the facts on the physical presence of Christ who is resurrected, has been experienced by the people. और ये ज़रूरी है जानना कि खुदा ने जो रूबरू में शारीरिक रूप में वो देखे गए हैं लोगों के बीच में. Jesus was first appeared to Mary Magdalene in an empty tomb on the day of resurrection. जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, मरी मगली को मिले. यूहन्ना 20:16 में हमने लास्ट संडे पढ़ा था. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे, the Bible tells us a number of people appeared after his death. बहुत लोगों को नजर आए उसके मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह. There are too many different people over 40 days. Too many. There are 40 dead people who saw Jesus Christ. Specifically, we see about a woman who came to tomb, Mary, the mother of James, Salome, Joanna, Peter. 2 शिष्य जो अमास के रोड पे जा रहे थे, जिसके विषय में आज बताया गया, बाइबल में पढ़ा गया है. वो फिर नजर आए 11 के बीच में. और फिर जब थोमा था तो उसके साथ नजर आए. He was there when Thomas was there. Before, without Thomas, he was there. Then there was the appearance of the 7 disciples at the Sea of Galilee. Then he appeared to the 5,500 people at the same time, as Paul says. And also appeared to James. And further he appears to Saul, who became Paul. And that's very important कि ये सब चीज़ें जो हैं खुदावन और बहुत तरीके से लोगों को प्रकट हुए. पर आज जब हम देखने जा रहे हैं appearances, many disciples who were doubtful that Christ is risen from the dead, it's not the fact that remained with them. These doubting disciples became a believing disciples, witnessing disciples. ये जो शक करने वाले शिष्य थे, अब ये गवाह देने वाले प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए. और जब ये गवाह देने वाले शिष्य बने तो खुदावन यीशु मसीह ने इनके जीवन में क्या काम किया, हम उनकी गवाही देते हैं. We hear the testimony of their witnessing. Today is what the testimony of their witnessing comes to us. It teaches us many things. It teaches us how Peter cites 3 evidences. The letter, the Paul's Acts of the Apostle that we read to us, chapter 2, 22 to 36. उसमें हम पढ़ते हैं 2:22 से 36 तक जब पढ़ते हैं कि पतरस 3 चीज़ें अपने उल्लेख में बताता है जब वो लोगों को एड्रेस कर रहा था. The first thing he talked about a miracle in verse 22, and then he talks about resurrection, कि वो दुष्टों के हाथों से मारा गया पर वो 3 दिन फिर जी उठा. And then we talk about his ascension in verse 32, 33 to 35, that God made him sit at the right hand of the Father, exalted him high. उसको ऊपर महिमा में परमेश्वर ने उसे उठा लिया अपने सिंहासन पे अपने साथ. The ultimate plan of Jesus' death was God's plan. And the secondary cause of his death was because of the hatred of godless Jews and Romans. जितने भी यहूदी लोग थे और रोम के लोग थे, उनके अंदर घृणा थी प्रभु यीशु मसीह के प्रति. और सच में खुदावन की ये मकसद था, ये प्लान था कि ऐसा बताया गया था कि खुदावन की मृत्यु हुई और 30 दिन फिर जी उठी. पहले पत्रस में जो अभी पाठ पढ़ा गया उसमें हम पढ़ते हैं यही बात बताई गई है. पत्रस अपनी पत्री में पहली पत्री में बताता है, उसका 3रा बाब उसके 13 से 18, from 13 to 18. God want to remind Peter as he tell his congregation to have this confidence during time of persecution, confidence of faith in Jesus. प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने जाओ. If God will punish who do evil,
then who will harm those who do good? अगर खुदावन जो है शैतान लोगों को सज़ा देगा तो जो अच्छे काम करते हैं उनके पर कोई हानि ना होगी। कैसा होगा? He reminds them 13वीं से लेकर 17वीं आयत तक, पहला पत्रस 3। We need to focus on blessing while enduring persecution, which is good. जब सता होता है तब हमें दुख और तकलीफ को हमें धीरज से झेलना पड़ेगा और धीरज में रहना पड़ेगा ताकि हम उसको सहन करते हुए प्रभु यीशु मसीह से आशीष ले सकें। As Prophet Isaiah said in chapter 8, यशायाह नबी 8:12 से 13 में लिखा है, Are you not to say it's a conspiracy in regard to all that this people call a conspiracy? And you are not to fear that they fear or be dreaded of it. It is the Lord of hosts whom you should regard as holy, and he shall be your fear, and he shall be your dread. Isn't it so beautiful? और कहा जिस बात से ये लोग राजद्रोह कहें उनको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वह डरते हैं इनसे तुम ना डरना ना भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। You know, it is the history has reminded, the prophecy is that they're not to fear or the people who brings fear on your life. Only fear is God who is holy. Only fear is that He's beyond dread. Only fear a person, the Lord of hosts. उसका भय खाना, उससे डरना, उसे ही पवित्र जानना. That is very important. The world and the persecution and suffering cannot stop us from witnessing our Lord Jesus Christ. So we need to testify today. हमको प्रभु यीशु मसीह की गवाही अपने जीवन में इन दिनों में देनी चाहिए और आने वाले जब तक जीवित हैं इस पृथ्वी पे हमें देनी चाहिए. How shall we do? Now the Bible is full of witnesses. There are two kinds of witnesses in the Bible. One is a witness for Lord Jesus Christ, for the God who has called and created us, and one is a false witness. But beyond this is the test that allow God to happen before we witness or while we are witnessing. जब हम गवाही देते हैं तो हमारे ऊपर बड़ी आजमाइश आती है और आजमाइशों का सामना करना ज़रूरी है अगर प्रभु यीशु मसीह सच में गवाही देनी. बाइबल में बहुत तरीके से बताती है कि जब सच्चाई की गवाही देते हैं तो आजमाइशें आती हैं. पतरस को आजमाइशें आई जब वो टेंपल कोर्ट में खड़ा हुआ लोगों को बोलने लगा था. तब उसको बताया गया, परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया, God stand in the temple court. He said, tell the people the full message of this new life. लोगों को जाके बताओ पतरस कि नया जीवन कैसा होता है. 21वीं आयत में बताया. उसके 5वें बाद में वो वहाँ खड़ा हुआ. He stood and teaching people to the high priest. They arrived. They call whole of the Sanhedrin council. पूरे Sanhedrin council को बुलाया. Elders Israel के आए. फिर क्या हुआ? पतरस को जेल में डाल दिया गया. But he never stopped witnessing for Christ. He kept on doing it. Paul, when he was preaching at the Corinth, Acts chapter 18 verse 10 says, while he was preaching, he said, do not stop. They will not bring you harm. वो तेरे पे हमला नहीं कर पाएंगे. God told him, because I have many people in this city. इस शहर में बहुत से लोग हैं जो तेरी रक्षा करें, तेरे को बचाएंगे. वो तेरे शरीर पे कोई हमला नहीं कर पाएंगे. There were many instances like this where Paul has been doing. And when he gave his third testimony of how his life got changed in Acts chapter 22, जो वो तीसरी बार गवाही दे रहा था अपने बारे में. And the testimony was in chapter 22 verse 15 or 14 or 15 further if you read. It says like this, you will be my witnesses to all the men what you have seen and heard. जिन्होंने तेरा वचन सुना है तेरे जरिए वो गवाह होंगे तेरे. They will stand as a testimony what you told, how the life had been changed by Lord Jesus Christ. It's very important. Jesus himself said in John chapter 15, you will testify. You will testify.
And you must testify, for you have been with me from the beginning. तुम मेरे साथ शुरू से रहे हो और तुम इस बात के गवाह होगे. You know, Luke in Acts chapter 1 at the starting gives a very good demonstration that what has been written, been told, we're telling you, even in the Luke gospel, जो लिखा गया है, जो बताया गया है, हम तुम्हें बताते हैं what we have received from the prophets. But there is a test. God demands a great sacrifice for witnessing. It's something like where God tests Abraham in Genesis chapter 22. अब्राहम को खुदावन ने टेस्ट किया, यहोवा ने उससे बोला है कि मैं यहाँ हूँ. जब उसे बुलाया, उसने कहा अपने बेटे को ले जा, इज़हाक को, जिससे तू बहुत मोहब्बत करता है, to the mount of Moriah. Sacrifice him there with the burnt offering on one of the mountain, and I will tell you about it. जा अपने बेटे की बलि चढ़ा दे इज़हाक की. What a great sacrifice was demanded, though God never sacrificed Isaac from the hand of Abraham. He guarded it after that. But that was the test. That was the test that was brought. God tests by witnessing in a very difficult situation. He made things difficult to make us understand how much we love Him. Something in Deuteronomy where Lord Yahweh told Moses in chapter 8 verse 2, remember how the Lord your God led you to the way in desert. याद रखो किस तरह उस जंगल में वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें 40 साल के लिए ले गया था. To humble you, ताकि तुम दीन हो जाओ. To test you, और तेरे को जांचे, so that you know what is in your, ताकि तुम्हें पता, खुदावन को पता लग जाए, ताकि तुम्हारे दिल में पता लग जाए, that you may know in your heart whether or not you would keep that. तुम्हारे दिल में पता है क्या तुम खुदावन के हुक्मों का पालन करोगे कि नहीं करोगे. कई बार तकलीफें आती हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं परमेश्वर को, पर यहाँ पर इतनी तकलीफ आई हुई है, बीमारी की तकलीफ आई है. इस साल हमारे को तकलीफ पता लग रही है, ना सिर्फ नौकरी की, ना सिर्फ पेशे की, ना किसी चीज़, बट इट्स नॉट अबाउट द जॉब, इट इज़ नॉट वेयर वी आर वर्किंग, वेयर वी आर स्टेइंग, अबाउट अ हाउस, अबाउट अ फैमिली, अबाउट अ डेथ, बट द प्रॉब्लम इज देयर इज अ सिकनेस on a whole human mankind. People are giving different term on this, but the Bible says God is testing you, that He may teach us to humble. हम प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन और नम्र होना सीख रहे हैं, और सीखना चाहिए, पश्चाताप करना, दीन होना. That's what Deuteronomy 8:2 is all about. Humbling, so that Lord will test our heart, how much we keep His commandment, how much closer we are with Him. It's very important. God also proposes hard task. He gives us a tough task. A very tough task. Time to feed 5,000 people. How? God knows it. 5,000 लोगों को खाना खिलाना, मच्छी नहीं है, रोटी नहीं है, कैसे खिलाना? और सबको मच्छी और रोटी मिली खाने. All got fish and bread to eat. How Paul and Silas were put to prison. They put hard tasks. They were flogged. उनको पीटा, उनको मारा. पेट में काम उसके 16 भाग में लिखा, पॉल और साइलस को जेल में पकड़ के मारा उन्हें, और जेल के गहरे स्थानों में उन्हें वहां पर बंदी गृह में बंद कर दिया. They took them down the jail and put him over there and put the guard. They throw them into inner cell and fasten their feet in stocks. उनके पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी. किस लिए? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को बारे बताते थे. जेम्स, याकूब की पत्री कहती है, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी और तीसरी, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 and 3 very emphatically tells, अगर टेस्टिमनी देनी है, गवाही देनी है, और गवाही में आगे बढ़ना है यीशु मसीह की, इसमें कंसिडर इट अ प्योर जॉय. आनंद समझो. किस चीज का आनंद? मेरे भाइयों, all my brothers, consider it a joy. What kind of a joy? Whenever you face trial of many, जब तुम पे बहुत तरह तरह के नाना प्रकार के सताए जाते हो, तुम पे सताव आता है. Consider this as a joy. This is a moment of joy when you suffer for not doing what is happening today of your suffering, but you're doing good as you look to Lord Jesus Christ. And further, उसके आगे बताया जाता है, उसकी तीसरी आयत में है,
याकूब की पत्री उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत बताती है, बिकॉज यू नो द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ डेवलप परसिवियरेंस, इसलिए तुम्हें पता लग जाए ताकि तुम्हारे धीरज से को जब जांचा जाता है, परखे जाते हैं तो विश्वास बढ़ता है। धीरज रखेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर परखता है, हमें देखता है, जांचता है। He knows where we are suffering. He knows how we are suffering. He knows our shortfalls. But he says, persevere. धीरज रखो, सहन करके रखो। खुदावन इस धीरज के अंदर परमेश्वर खुशी देगा। He'll give you joy in this perseverance because you kept the faith. You kept the battle. ये सोच के रखना कि विश्वास है और गवाही देने के वसीले के लिए है, तो हमको गवाही देनी जरूरी है। It is important if the faith is there to be witnessed. It is the testimony today must be shared with many people. आज का समय कि हम गवाही दें लोगों को, यीशु मसीह जी उठाए, and our resurrection which is stored in Jesus Christ in heaven, with that faith and hope we testify today. हम डरे ना शिष्यों की तरह, तो प्रभु यीशु मसीह के पहले डर गए पर बाद में गवाह बने। Let us remain firm and committed to testify Lord Jesus Christ. Lord, bless these words as they are spoken and bless the heart that has heard these words. खुदावन जो ये शब्द बोले गए इस पर आशीष दीजिए और जिन्होंने इसे सुना है उनको अपनी आशीष भरपूरी दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Let us all affirm our faith and say together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. इत्मीनान का खुदा जो हमारे खुदावन यीशु मसीह को मुर्दे में से ज़िंदा करके उठा लाया, तुमको हर एक नेक बात में कामिल करें ताकि तुम उसकी मर्ज़ी को पूरा करो। The God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, make you perfect at every good work to do His will, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be remain with us now and forever. Amen.